जितना जल्दी हो सके आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए तो। और साथ में रेनबो इंग्लिश भी रखिएगा। साथ में जो आपका रेनबो इंग्लिश जो है आप उसे भी रखेंगे। जितना जल्दी हो सके जल्दी से जुड़िए। जल्दी से जुड़ जाओ आप लोग, क्लास शुरू करेंगे अब। जितना जल्दी आप जुड़ोगे उतना जल्दी हम क्लास को स्टार्ट कर पाएंगे। और हो सके तो क्लास बस शुरू ही हो जाएगी अब। अगर किसी को क्वालिटी में दिक्कत हो रहा हो तो प्लीज़ क्वालिटी को बढ़ा लो। वो थ्री डॉट पे जाके ना क्वालिटी को बढ़ा के अच्छा कर लो, क्योंकि नेट बचाओगे तो फिर कैसे हो पाएगा। जितना जल्दी आप जुड़ोगे उतना जल्दी हम क्लास को स्टार्ट कर पाएंगे। और हो सके तो क्लास बस शुरू ही हो जाएगी अब। अगर किसी को क्वालिटी में दिक्कत हो रहा हो तो प्लीज क्वालिटी को बढ़ा लो। वो थ्री डॉट पे जाके ना क्वालिटी को बढ़ा के अच्छा कर लो। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपके पास तो ये बुक जरूर होगा, रेनबो इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 दिख रहा है ना आपको। रेनबो पार्ट 2 जो है उसका उसका जो पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। चलिए हम उसका रीडिंग करते हैं। अच्छे से आप देखोगे और वीडियो को मैं यूट्यूब पे डाल भी दूंगा, आप बाद में भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बार बार देखोगे आपको कंठस्थ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बचेगी आपको। तो हम तो सारे स्टूडेंट को बोले थे ऑनलाइन आने के लिए, कितना स्टूडेंट को पता भी नहीं होगा कि कैसे ऑनलाइन आया जा सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे सीख जाओगे आप। तो क्लास को शुरू करें, जल्दी से कमेंट करिए, क्लास को शुरू करें। जल्दी से जो ऑनलाइन नहीं आ पाए हो जल्दी से ऑनलाइन आइए, बस आवाज़ सुनना ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए तब क्लास को स्टार्ट करते हैं। सामने में जो रेनबो इंग्लिश है
मैंने उसका पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को उल्टाया हुआ हूँ। तो अच्छा से देखिए, मोबाइल का आवाज़ अच्छा से बढ़ा लीजिए और कमेंट करना छोड़िए, अब देखिए अच्छा से, ठीक है ना। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, जिसके कि राइटर हैं महात्मा गांधी। चलिए लाइन बाय लाइन देखिए अच्छा से। मोहनदास करमचंद गांधी 1869 to 1948, popularly known as बापू और द फादर ऑफ द नेशन, was more a spiritual leader than a politician। क्लियर ना। और जब हम पढ़ना सीख जाएंगे तो हम पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ सकते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। आप भी पढ़ पाएंगे, पहले धीरे से सीखिए। ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट इन द ब्रिटिश रूल in India and helped India gain independence from 1915 till 1948. He completely dominated Indian politics. He died at the hands of a fanatic on 30 January 1948. His autobiography, My Experiments with Truth, My Experiment with Truth, and the numerous articles that he wrote for young India and the speeches that he delivered on different occasions reveal him not only as an original thinker but also as a great master of chaste idiomatic English. In the following extract, Indian civilization and culture, Gandhiji talks about the sound foundation of Indian civilization, which has successfully withstood the passage of time. The Western civilization, which has the tendency to privilege materiality cannot match the इंडियन सिविलाइजेशन। मैंने आपको बताया था कि वोवेल साउंड होगा तो दी पढ़ेंगे टीएचई को, कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो दो पढ़ेंगे टीएचई को। द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स, क्या पढ़ेंगे इसे हम, एलिवेट्स द मोरल बीइंग, दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक ही तरीका है रीडिंग सीखने का कि सामने में बुक रखें और मैं आपको रोज़ लाइव क्लास दूंगा, और जब तक आपकी रीडिंग प्रॉब्लम दूर नहीं होएगी तब तक सीखना तो दूर की ही बात, असंभव है आपको अंग्रेजी बोलना। तो रीडिंग प्रॉब्लम दूर करना है तो ज़रूर आप लाइव आइए और जुड़िए। चलिए हम शुरू करते हैं। अब स्टेंजा नंबर 1 देखिए। आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ evolved
क्या पढ़ेंगे इसे हम? इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बिटन इन द वर्ल्ड, नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स। क्या पढ़ेंगे? एंसेस्टर्स। रोम वेंट, ग्रीस शेयर्ड द, पेज उल्टा लीजिए अब, ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, द माइट ऑफ फेराउज वॉज ब्रोकन, ब्रोकन नहीं, ब्रोकन। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड, वेस्टर्नाइज्ड। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, बट इंडिया इज स्टिल somehow or other sound at the foundation. The people of Europe learn their lessons from the writings of the men of Greece and Rome, which exist no longer in their former glory. In trying to learn from them, the Europeans imagine that they will avoid the mistakes of Greece and Rome. Such is their pitiable condition. Such is their pitiable condition. ठीक है ना? अब चलिए 2 में चलते हैं, स्टेंजा नंबर 2 में। अच्छे से ध्यान दो, आपके मोबाइल का एमबी भी खर्चा हो रहा है, नेट भी खर्चा हो रहा है, तो प्लीज़ बी कॉन्सेंट्रेट ऑन योर मोबाइल स्क्रीन। आवाज़ पर ध्यान दीजिए और आपकी निगाहें आपके बुक में उंगली देकर पढ़िए अच्छा से। सेकेंड देखिए, इन द मिड्स्ट ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। It is a charge against India that her people are so uncivilized, ignorant, and stolid that it is not possible to induce them to adopt any changes. It is a charge really against our merit, what we have tested and found true on the anvil of experience. We dare not change. Many thrust their advice upon India, and she remains steady. This is her beauty. It is the seat anchored of our hope. अब चलिए स्टेंजा नंबर 3 में चलते हैं। Civilization is that mode of conduct which points out to man the path of duty. Performance of duty and observance of morality are convertible terms. To observe morality is to attain mastery over our minds and our passions. So doing, we know ourselves. The Gujarati equivalent for civilization means good conduct. If this definition be correct, then India, as so many writers have shown, has nothing to learn from anybody else, and this is as it should be. पांचवा देखिए स्टेंजा। We notice that the mind is a restless bird. The more it gets, the more it wants, and still remains unsatisfied. The more we indulge in our passions, the more unbridled they become. Our ancestors therefore set a limit to our indulgences. They saw that happiness was largely a mental condition. आगे देखिए, a man is not necessarily happy because he is rich or unhappy because he is poor.
The rich are often seen to be unhappy, the poor to be happy. Millions will always remain poor. Observing all this, our ancestors dissuaded us from luxuries and pleasures. We have managed with the same kind of flow as existed thousands of years ago. We have retained the same kind of cottages that we had in former times, and our indigenous, क्या पढ़ेंगे इसे, indigenous education remains the same as before. We have had no system of life corroding competition. Each followed his own occupation or trade and charged a regular wage. It was not that we did not know how to invent machinery, but our forefathers knew that if we set our hearts after such things, we would become slaves and lose our moral fiber. They therefore, after due deliberation, decided that we should only do what we could with our hands and feet. They saw that our real happiness and health consisted in a proper use of our hands and feet. आशा करता हूँ स्टूडेंट, जो मेहनती स्टूडेंट है, लेबोरियस स्टूडेंट है, जिसको सीखने का ललक है, सीखने की इच्छा है, वो इस वीडियो का ज़रूर ही फायदा उठा रहे होंगे। चलिए 7 नंबर स्टेंजा में चलते हैं। They further reasoned that large cities were a snare and a useless encumbrance, and that people would not be happy in them, that there would be gangs of thieves and robbers, prostitution and vice flourishing in them, and that poor men would be robbed by rich men. They were therefore satisfied with small villages. They saw that kings and their swords were, where नहीं पढ़ना है आपको, word पढ़ना है, WERE को, were inferior to the swords of ethics, and they therefore held the sovereigns of the earth to be inferior to the rishi and the fakirs. A nation with a constitution like this is fitter to teach others than to learn from others. This nation had courts, lawyers, and doctors, but they were all within bounds. Everybody knew that these professions were not particularly superior. Moreover, these wakils and wives did not rob people. They were considered people's dependents, not their masters. Justice was tolerably fair. The ordinary rule was to avoid courts. There were no thoughts to lure people into them. This evil too was noticeable only in and around capitals. The common people lived independently and followed their agriculture occupation. They enjoyed true home rule. अभी लाइव क्लास ख़त्म भी हो जाएगा, उसके बाद भी आप इस वीडियो को बार बार पढ़ोगे, समझ में आ जाएगी, आपको रीडिंग देना आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेंजा नंबर 9 देखिए।
the Indian civilization as described by me has been so described by its votaries in no part of the world, and under no civilization all men attained perfection. The tendency of Indian civilizations is to elevate the moral being. That of the Western civilization is to propagate, क्या पढ़ेंगे? Propagate immorality. The latter is godless. The former is based on a, आगे उल्टाइए पेज, belief in God, so understanding and so believing it behoves every lover of India to cling to the old, to the old होगा, old में vowel sound आ रहा है, तो the old Indian civilization, even as a child clings to the mother's breast. क्लियर है ना? 10 में देखिए, I am no hater of the West. I am thankful to the West for many a thing I have learned from Western literature. But I am thankful to modern civilization for teaching me that if I want India to rise to its fullest height, I must tell my countrymen frankly that after years and years of experience of modern civilization, I have learned one lesson from it, and that is that we must shun it at all costs. What is that modern civilization? It is the worship of the material. It is the worship of the brute in us. It is unadulterated, अच्छा से सुनिए, unadulterated materialism, and modern civilization is nothing if it does not think at every step of the triumph of material civilization. It is perhaps unnecessary, if not useless, to weight the merits of the two civilizations. It is likely that the West has evolved a civilization suited to its climate and surroundings, and similarly we have a civilization suited to our conditions, and both are good in their own respective spheres. The distinguishing characteristic of modern civilization is an indefinite multiplicity of human wants. The characteristic of ancient civilization is an imperative restriction upon and a restrict regulating of these wants. अब आगे देखिए, the modern or Western insatiableness arises really from want of living faith in a future state, and therefore also in divinity. The restraint of ancient or Eastern civilization arises from a belief, often in spite of ourselves in a future state and the experience of a divine power. Some of the immediate or brilliant results of modern inventions are too maddening to resist, but I have no manner of doubt that the victory of man lies in, क्या है यहाँ पे दिख नहीं रहा है, lies in that resistance
we are in danger of battering away the permanent good for a momentary pleasure. Just as in the West they have made wonderful discoveries in things material, similarly, Hinduism had made still more marvelous discoveries in things of religion, of the spirit, of the soul. But we have no eye for these great and fine discoveries. We are dazzled by the material progress that Western science has made. I am not enamored of that progress. In fact, it almost seems as though God, in His wisdom, has prevented India from page ulta progressing along those lines so that it might fulfill its special mission of resisting the onrush of materialism. After all, there is something in Hinduism that has kept it alive up till now. It has witnessed the fall of Babylonian, Syrian, Persian, and Egyptian civilizations. Cast a look around you. Where is Rome and where is Greece? Can you find today anywhere the Italy of given, or rather the ancient Rome? For Rome was Italy. Go to Greece. Where is the world famous Attic civilization? Then coming to India. Let one go through the most ancient records and then look around you, and you would be constrained to say, yes, I see here ancient India still living. True, there were dung heaps too, there, here and there, but there are rich treasures buried under them, and the reason why it has survived is that the end which Hinduism set before it was not development along material but spiritual lines. चलिए 20वां स्टेंजा देखिए. Our civilization, our culture, our swaraj depend not upon multiplying our wants, self-indulgence, but upon restraining one's self-denial. 21 देखिए. European civilization is no doubt suited for the Europeans, but it will mean ruin for India if we endeavor, क्या होगा, endeavor to copy it. This is not to say that we may not adopt any assimilate whatever may be good or and capable of assimilation by us, as it does not also mean that even the Europeans will not have to part with whatever evil might have crept into it. 22nd देखिए 22वां. The incessant search for material comforts and their multiplication is such an evil, and I make bold to say that the Europeans themselves will have to remodel their outlook if they are not to perish under the weight of the comforts to which they are becoming slaves. It may be that my reading is wrong, but I know that for India to run after the golden fleece, क्या पढ़ेंगे इसे हम, fleece, is to court certain death. Let us engrave on our hearts who profess to do the thinking for the masses, run the risk in a vain search
after high living of missing high thinking. Civilization, sense of the term, consists not in the multiplication but in the deliberate and voluntary restriction of wants. This allows eases and promotes contentment and happiness, contentment, real happiness and capacity for service. और लास्ट स्टेंजा है इस चैप्टर का, ए सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट्स is necessary, but above a certain level, it becomes a hindrance instead of help. Therefore, the ideal of creating an unlimited number of wants and satisfying them seems to be delusion and a snare. The satisfaction of one's physical needs, even the intellectual needs of one's narrow self, must meet at a certain point, a dead stop, before it degenerates into physical and intellectual voluptuousness. A man must arrange his physical and cultural circumstances so that they do not hinder him in his service of humanity, on which all his energies should be concentrated. तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का एक एक लाइन का आपने उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन, रीडिंग देखा और सुना भी। तो स्टूडेंट्स, रीडिंग ठीक करने का बस एक ही तरीका है, जरिया है। अभी तो आपने पढ़ा है अच्छा से, जब क्लास में मैं ऑफलाइन हो जाऊंगा अभी, तो आप करना क्या, इस सारे चीजों को फिर से इस वीडियो को प्ले करिएगा, और प्ले करने के बाद आप क्या करना, जब फिर से वीडियो ये प्ले हो जाए ना, तो उसके बाद आप क्या करिएगा अच्छा से, कि पढ़ाए हुए चीजों को क्या करना, बार बार सुनोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इस वीडियो को मैं अभी क्या कर रहा हूं, तो YouTube पे छोड़ दे रहा हूं, अपलोड कर दे रहा हूं, आप अच्छे से इसको बार बार देखिएगा। आज पहला लाइव क्लास था और बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी नहीं था कि कैसे लाइव आए और कैसे जुड़ के कमेंट करके कुछ पूछे हमसे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लाइव क्लास को मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। आप बार बार इसे पढ़ें, इस वीडियो को बार बार देखें और सामने में बुक भी रखें, और जो भी परेशानी, दिक्कत हो, आप उसे बार बार भी दूर करने का प्रयास करें, ठीक ना। अगर आपको यह आज का लाइव वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका जो फ्रेंड हीरो ऑफ इंग्लिश क्लासेस में नहीं भी पढ़ रहा हो, आप चाहें और अगर वो सीखना चाह रहा हो बुक का रीडिंग कैसे करें, तो उसे भी आप यह वीडियो शेयर कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, और हो सके तो स्टेटस में भी लगाइए, ताकि जिसको ज़रूरत है बुक का रीडिंग सीखने का, वह सीख सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने चैप्टर नंबर जो 1 है आपके रेनबो इंग्लिश से, उसका एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन किया हूँ, अभी रीडिंग किया हूँ। जो भारी भारी वर्ड है उसे आप बार बार सुने, पीछे कर कर के सुने, और कल मैं दूसरे चैप्टर को लेके आऊँगा। तो अभी अगर मैं ऑफलाइन होऊंगा, तो आपका काम है कि बार बार पढ़ाए गए चीज़ों को पढ़ोगे, बार बार वीडियो देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। गॉड ब्लेस यू, टेक योर बेस्ट केयर, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।